स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं गेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर। बहुत दिन से आप लोगों ने पूछा था, सो आज गेट पूरा सॉल्व करेंगे। और पहला स्टार्ट करेंगे इस सेक्शन से इकोनॉमिक्स का, जो आमतौर पे कोई करता नहीं है। सो आई विल ऑब्वियसली गिव यू दिस जनरल एप्टीट्यूड सेक्शंस फुल आंसर एज वेल। तो रफ़ी ने मेरी को क्या कहा, आई एम थिंकिंग ऑफ वाचिंग अ फिल्म दिस वीकेंड, द फॉलोइंग reports the above statement in indirect speech. So Rafi told Mary that he was thinking of watching. So was और एक ing add हो जाएगा. So was thinking. So D is the answer. दूसरा permit और पता नहीं, लेकिन enforce और ये दोनों हैं opposite to each other. ठीक है, तो परमिट मतलब जाने के लिए बोल रहा है, तो ना जाने के लिए क्या होगा, फॉरबिट करना। सो बी इज द आंसर। 3 में चलते हैं। 6 pieces die with the faces 1 2 3 4 5 6, probability of getting 1 in the first roll of the dice and 4 on the second, मतलब पहली बार में एक, दूसरी बार में 4। सो पहली बार एक आने का चांस है 1/6। So after the first roll we roll again, so each of the have the same kind of an appearing, तो 4 आने का भी chances 1/6 ही होगा। पहली बार आ गया है, नहीं आया, इसके लिए कुछ नहीं है। so दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1/36। so the answer is A। नेक्स्ट 4 नंबर करेंगे। A recent survey shows that 65% of the tobacco users were advised to stop consuming tobacco. The survey also shows that 3 out of 10 tobacco users attempted to stop using tobacco. Based on the following information in the above passage, what is the logically inferred with certainty? Okay, so here a majority of the tobacco users who were advised to know, this is not applicable, not major, direct इसे नहीं कहा जा सकता है। Next is logically a majority of the tobacco were advised to stop consuming tobacco, did not attempt to do so. This is correct. Approximately 30%, नहीं, ये percentage निकाला जाए, approx 65% नहीं, ये दोनों भी नहीं है। So D is the